Good morning, students. Students, today let's start our topic with this heading: France abolished monarchy and becomes a republic. Now, you see, students, when in 1791 National Assembly was formed by the third estate, then there were some changes. There were made some changes, and instead of monarchy, France became constitutional monarchy. But after some time, 100% monarchy was abolished and France became a republic. How did it happen? Let us see. The situation in France continued to be tense during the following years. After 1791 के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation. हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया, लेकिन पर्सिया के राजा के साथ उसने संधि कर ली अंदर ही अंदर. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces बाहर आए निकल के to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over the Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Rosette de Leslie. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. Now, the Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties. जितने जितने लड़ाइयाँ हुई उससे और ज़्यादा बर्बादी होती चली गई और आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक परेशानी आती गई to the people. While the men were away fighting at the front, women were kept to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large sections of the population they were convinced that the revolution had to be carried further, क्योंकि लोगों को ये कन्विंस करा लिया था कि रेवोल्यूशन को आगे चलाना ही है. As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ 25 ईयर्स ऑफ एज है जिसकी, उससे ज़्यादा और जो टैक्स पेयर है उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स थे. So political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, लेडीज़ ने भी, विमेन ने भी, जो पूरे इस टाइम पे बहुत एक्टिव थी, फॉर्म देयर ओन क्लब. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. Later on we will discuss about that. The members of the Jacobin clubs belonged mainly to the less prosperous sections of the society. जितने भी जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे ज़्यादातर वो गरीब परिवार से थे, गरीब सेक्शंस के थे. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilien Robespierre, and a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. And this was to set themselves, ये किस लिए किया गया, apart from the fashionable sections of the society, कि हम fashionable जो upper class है उनसे अलग दिखना है, especially nobles who wore knee breeches, जो कि घुटनों तक के जूते बूट्स पहनते थे. And it, one minute, yes, it was a way of proclaiming, अब यही एक तरीका था प्रोक्लेम करने का, द एंड ऑफ पावर्स, कि जो हमें पावर का एंड करना है, वेल्डेड बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस.
These Jacobins came to be known as the Sandclutters. Literary meaning. What do you mean by Sandclutters? Literary meaning those without knee breeches. Sandclutters men worn in addition the red cap. साथ में वो एक एडिशन में उन्होंने रेड कैप भी पहनी. That symbolized liberty. Earlier we read about it. Women however were not allowed to do so. हालांकि women को अभी भी कोई भी आज़ादी नहीं थी. In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply of high prices of food. On the morning, as a result, on the morning of August 10, they stormed the palace of Perlis, massacred the king's guard and the king himself as hostage, और किंग को होल्ड कर लिया फॉर सेवरल आवर्स. लेटर द असेंबली, बाद में जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ, उसके बाद से ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस, चाहे वो उनके पास दौलत थी या नहीं, गॉट द राइट टू वोट. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. अब जो नई इलेक्ट असेंबली बनी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन. एंड ऑन 21 September 1792 इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. As you know, republic, what do you mean by republic? It is a form of government where the people elect the government including the head of the state, जहाँ पर लोग ही अपने स्टेट को और पूरी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some of other countries. कुछ और भी कंट्रीज़ के नाम आप लिख सकते हो that are republic and investigate when and how they became so. लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ. लुइस 16 को फिर मौत की सज़ा सुना दी गई बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. ट्रीजन होता है देशद्रोह. ऑन 21 January 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड एंड द क्वीन मैरी एंटोनियो मेट विद द सेम फेट. उसको भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा गया शॉर्टली आफ्टर. बट आफ्टर 1793 the period which was followed, or the time which was followed, that was also not good for the people, and that's why that period it was known as the reign of terror. That was the period, that was the time of 1 year. The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. इसको reign of terror ही बोला गया है. Robespierre followed. Why it is known as reign of terror? Because Robespierre, who was the head of Jacobins, he followed a policy of severe control. उसने बहुत कंट्रोल की पॉलिसी एंड पनिशमेंट की पॉलिसी चलाई. All those whom he saw as being enemies, जिन भी लोगों को वो अपना दुश्मन समझता था of the republic, for example ex-nobles, clergy, members of other political parties and even members of his own party who did not agree with his method were arrested. उनको अरेस्ट कर लिया गया, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal. उसके सामने कोर्ट के सामने उनको ले जाया गया. and if the name was revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. Now the word guillotine, what do you mean by guillotine? The guillotine is a device. ये एक ऐसा डिवाइस था consisting of two blades and two poles and a blade. एक बड़ा सा ब्लेड और दो पोल के बीच में विद विच अ पर्सन इज beheaded, जहाँ पर एक आदमी का सिर रख के और उसको ऊपर से काट दिया जाता था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलेटाइन हु इन्वेंटेड इट. नाउ रॉब्सपेरेज गवर्नमेंट इशूड लॉ. रॉब्सपेरे की जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे ऐसे नियम बनाए, प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग, जिस पर कंट्रोल कर दिया ऑन वेजेस पे भी और प्राइसेस पे. मीट एंड ब्रेड वर राशनड. मीट और ब्रेड पर को राशन कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया. पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव white flour was forbidden. All citizens, they were required to eat the pain d'elegate, means equality bread. bread के इक्वल ही एक
चीज़ होती है खाने की, a loaf, एक रोटी का ऐसा टुकड़ा, मेड ऑफ होल व्हीट, जो सिर्फ सारे ही अनाज से बनता है, वाइट फ्लोर मतलब वाइट कलर के प्योर उससे नहीं. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional monsieurs, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर एंड मदाम, मैडम, all French men and women, they were henceforth known as citoyen and citoyenne, means citizen. Churches were shut down and their buildings were converted into barracks or offices. रॉब्सपेरे परसुएडेड, उसने अपनी इन पॉलिसीज़ को परसुएड किया, सो रेलेंटलेसली, इतने निर्दयता से, इतनी बुरी तरह से, दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, कि इवन उसके सपोर्टर्स ने इसमें चेंज की डिमांड की. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, उसको भी कसूरवार ठहराया गया. इन जुलाई 1794 he was arrested and on the next day he was sent to the guillotine. So this is all for the day, and tomorrow we will discuss the chapter further.